Students, today we will read page 73 of chapter 6, Understanding Our Criminal Justice System. What is the role of the public prosecutor? A criminal offense is regarded as a public wrong. What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole. Do you remember the case of the dowry death of Sudha that we read about in the previous chapter? The case against the accused Lakshman and his family was presented by the state. That is why the case was called the State Daily Administration versus Lakshman Kumar and others. Similarly, the above case can be called State versus Shanti Hembram and not Mrs. Shinde versus Shanti Hembram. In court, it is the public prosecutor who represents the interests of the state. The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. She has no role to play in the investigation. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state. As an officer of the court, it is his or her duty to act impartially and present the full and material facts, witnesses, and evidence before the court to enable the court to decide the case. What is the role of the judge? The judge is like an umpire in the game and conducts the trial impartially and in an open court. The judge hears all the witnesses and any other evidence presented by the prosecution and the defense. The judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and in accordance with the law. If the accused is convicted, then the judge pronounced the sentence. He may send the person to jail or impose a fine or both, depending on what the law prescribes. What is a fair trial? Let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti's case very differently. What if the court did not give a copy of the charge sheet? So we have read this page. Now we can understand. We will understand in हिंदी also. बच्चों आज हम समझेंगे क्रिमिनल कोर्ट में 3 इंपॉर्टेंट चीजें. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल, जज का रोल और फेयर ट्रायल का मतलब. व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? जब कोई क्राइम होता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है. इसलिए केस का नाम होता है स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड. जैसे स्टेट वर्सेस शांति हेमब्राम. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है? स्टेट मतलब सरकार की तरफ से कोर्ट में केस लड़ता है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद केस शुरू करता है, सच को छुपाता नहीं है, इम्पार्शियल रहता है. कोर्ट के सामने सबूत, गवाह, सबूत मतलब एविडेंस, गवाह मतलब विटनेस, सच्ची बात रखता है. एक लाइन में आप याद रख सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकार का वकील जो सच कोर्ट के सामने रखता है. व्हाट इज द रोल ऑफ द जज? जज का गेम के एम्पायर जैसा, जज को हम गेम के एम्पायर जैसा माना गया है. जज दोनों साइड की बात सुनता है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों को सुनता है, खुले कोर्ट में बिना पक्षपात के काम करता है. जज का डिसीजन अक्यूज्ड, दोषी जो गिल्टी है या निर्दोष इनोसेंट है, ये डिसाइड करता है जज. अगर दोषी है तो जेल, फाइन या दोनों लॉ के हिसाब से होगा. और एक लाइन में हम जब जज को समझ सकते हैं कि जज का मतलब होता है निष्पक्ष फैसला करने वाला व्यक्ति. शांति के केस में एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इस केस में शांति पर गोल्ड चेन चोरी का आरोप लगाया गया. जज ने सभी गवाहों की बात सुनी
और सबूत देखे, उसके बाद ही जज ने अपना फैसला दिया। जज फैसला सिर्फ बात सुनकर नहीं, सबूत, गवाह, कानून के आधार पर करता है। और व्हाट इज द फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल का मतलब होता है एक्यूज्ड को चार्जशीट की कॉपी मिले, अपनी बात रखने का मौका मिले, लॉयर की मदद मिले, जज निष्पक्ष हो, केस खुले कोर्ट में चले। और फेयर ट्रायल को हम एक लाइन में कैसे समझेंगे? सबको बराबरी का न्याय मिलना। इसलिए बच्चों, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज और फेयर ट्रायल तीनों बहुत जरूरी होते हैं। तो आज हमने पेज 73 पढ़ा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे 3: पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जज और फेयर ट्रायल।